So, though unlike Hobbes, whose state of nature, is state of war, for Locke we have seen that state of nature is quite peaceful. यानी कि peace exists in a state of nature, शांति रहता है. लेकिन लॉक फिर भी एक बात कहता है कि इसका यह मतलब नहीं है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो परफेक्ट है. मेरा भी स्टेट ऑफ नेचर परफेक्ट नहीं है. और कुछ चीजें हैं वहां पे जिसकी कमी है, जिसके कारण लोगों को इनकन्वीनियंस होता है. दैट्स अ वर्ड लॉक यूजेस. पीपल फेस a certain kind of inconvenience, right? Their Locke basically lists three kind of inconvenience that exist in state of nature, and that is a absence of established law. लिख लीजिए. Inconveniences to the people which exist because of these three reasons. A, absence of established law. कोई लॉ established नहीं है स्टेट ऑफ नेचर में. अपार्ट फ्रॉम लेट्स से लॉज ऑफ नेचर which covers a certain aspect, लेकिन लाइफ एंड एक्टिविटी requires legislation in several other matters, है ना. वो तो नहीं हो सकता है किसी के द्वारा, right? Established law. So this is one thing which is absent. It's something that I am talking about in state of nature. Why people want to come out of a state of nature? If everything is sound, if everything is peaceful, then one might ask why people want to come out of a state of nature. So Locke will respond, बॉस देखो हमारा स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है. इट्स नॉट परफेक्ट. तो वहां पर क्या क्या कमी है? तो एक हमारे पास एब्सेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ, बहुत सारे चीजों के ऊपर में हमारे पास कानून नहीं. दूसरा, इम्पार्शियल जज का एब्सेंस होना, राइट? एब्सेंस ऑफ एन इम्पार्शियल जज. मैंने ये बताया था कि व्हाई डू यू नीड एन इम्पार्शियल जज? क्योंकि ए और बी कंपटीशन में दौड़े तो कौन जीता, इस बात को तय कौन करेगा? दिस इज एब्सेंट in a state of nature. Everyone is free and everyone is equal. So who will decide? And that is why you need to create a impartial judge, right? So this is absent. Absence of impartial judge, right? And the third one is you need power, to back any sentence or ruling. है ना? You need power to back any sentence or ruling. For instance, let's say Utkarsh promised to Aswathi that I will pay your 500 rupees after 10 days, है ना? And on that promise you gave him 500 rupees. ठीक है? अब उसके बाद in front of 2-3 people, let's imagine a condition. अब उसके बाद after 10 days Utkarsh says that I haven't taken your 500 rupees. I don't know you. ठीक है? You might bring 3 witnesses जो उस समय में मौजूद थे while you were exchanging that money or you were giving that money to him or you were conducting your transaction. And all 3 stand in your favor, Aswathi's favor, saying that yes, Utkarsh took that 500 rupees from Aswathi.
and now he is denying that 500 rupees and not even recognizing her. So he should be punished. But Utkarsh too has similar amount of freedom and equality, which those two people have, which you have. And his jurisdiction is also very much similar to which you have and to other have. आई बात समझ में ना? So even a ruling was given कि Utkarsh as a result was proved wrong and you will have to pay 1500 rupees to Aswathi. वो बोले नहीं देंगे, क्या कर लोगे? So you are missing what? This power to back any sentence or ruling, right? This is absent in state of. As a result, you know, as a result, now there might also be, there are some other scholars who also believe that, you know, as you said, disparities of wealth, disparities in wealth, ठीक है उत्कर्ष, this might also be the reason, you know, since Locke is the one who favors private property, and private property can be, and of course it is not can be, I mean it is bound to be unequal, है ना? Someone might own, let's say, huge tract of land, other might not have that much of big tract of land, might have a small tract. This can also create inconvenience in a state of nature where everyone is free and equal, right? This can also create, I consider that argument, कि this can also create inconvenience, ठीक है? As a result, all these four reasons that I have stated right now, you know, pushes Locke. Three, and you can consider this as fourth reason as well. As a result, you know, individuals, you know, set up civil and political society. तो सोसाइटी पहले भी था, स्टेट ऑफ नेचर में भी सोसाइटी था. अगर ये स्टेट ऑफ नेचर है, इसमें भी सोसाइटी था, लोग रह रहे थे. ऐसा नहीं यहाँ पे एकदम उथल पुथल हो गया, लाइफ सरवाइव नहीं करा, प्री सोशल प्री पॉलिटिकल टाइप का मामला नहीं है जो हॉब्स के लिए है. आप देख रहे हैं ना, वहां पे सोशल भी नहीं है, कोई किसी को मार सकता है, कभी भी मार सकता है. समझ रहे बात ना? और पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं है. लॉक के लिए सोशल रहा है पहले से, लेकिन वो सोसाइटी इज विदाउट गवर्नमेंट. हाँ, विदाउट गवर्नमेंट. सो दिस इज न्यू एडिशन टू द सोसाइटी विच इज फॉर्म्ड आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट. यू नो, ये बीच में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बाद जो निकल के आता है, उसका खूबी ये है कि ये समाज में सरकार रहती है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो एब्सेंट है, राइट? इसमें गवर्नमेंट जो है वो एब्सेंट है, यहाँ पे एकदम खाली है, इसमें आपको सरकार रहती है. आई बात समझ में सारे लोगों को? ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड what is the purpose of this government? Why do we have this government? To secure and preserve life, liberty, and property. Why do you need government? To preserve these three things, right? स्टेट ऑफ नेचर से निकलने का कोशिश करते हैं, और जब हम लोग स्टेट ऑफ नेचर से निकलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? एक सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी का निर्माण करते हैं, राइट? समझ में आ रही है बात? जिसमें हमारी सरकार रहती है.
सरकार का काम क्या है? आपका लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना, क्योंकि लॉक का मानना है कि अगर आपके पास अगर लाइफ, लिबर्टी और लाइफ बहुत इंटैंगल्ड चीज है एक दूसरे से, ये समझने की जरूरत है आपको। लिबर्टी जो है ये लाइफ को डिफेंड करता है, हमेशा याद रखेगा, ठीक है ना। इफ योर लिबर्टी इज बीइंग इंडेंजर्ड, योर लाइफ कैन बी इंडेंजर्ड, ठीक है, आई बात समझ में। एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग विच लॉक सेयर्स, ठीक ना। इसीलिए आपको देन यू हैव टू प्रोटेक्ट, एंड प्रॉपर्टी जो है वो लिबर्टी को फेंस करता है। ठीक है, आपको कुछ चाहिए, अब हम कह देंगे आप खरीद लीजिए, आप फ्री हैं खरीदने के लिए और पैसे नहीं है आपके पास, तो आप लिबर्टी लेकर क्या करिएगा? इस मुनीरका के स्लम में रहने वाले लोग भी फ्री हैं, है ना। कहने को उनके पास में भी गाड़ी हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे उस फ्रीडम का वो, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है। सो यू सी A, B, C, you know, A and B equal, C and A are equal, so B and C are equal, all of them are equal. So life, liberty and property thus becomes important for Locke. ठीक है, they are interconnected, yes. समझ में आई बात? To come out of it, आपने कुछ किया, ठीक है ना, लेकिन आने के बाद क्या प्रोविजंस होने चाहिए? ये दो अलग अलग चीजें हैं। Why do you need to come out of a state of nature if everything is good? Four points which I said. Now after you come out, you make a government. What is the purpose of the government? To ensure life, liberty and property. Why to ensure life, liberty and property? You cannot discount on any single factor. That is something which Locke will suggest you. कि you cannot say कि liberty देते हैं और property देते हैं और life का कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। You let's say life आपका रहेगा और property रहेगा, liberty का कोई मतलब नहीं। Anything cannot go missing. Not even a single thing can go missing, because all three of them are interconnected. A government might be there which can ensure you life and property, but not liberty. Let's say a dictatorial government. I won't name any, which will give you life, which will give you property, but will say keep silent, don't speak. You don't have freedom of speech and expression. And once you speak, you will be crucified. समझ में आ रहा है बात ना? So in that case, कोई कहेगा कि लॉक का कंडीशन पूरा हो गया. No, it is not. Because this is missing, and since this is missing, this can any day be endangered. समझ में आ रहा है बात ना? So that is why all of them are integrated. So government needs to protect all of these. आई बात समझ में? A government needs to protect all of these. ठीक है? And प्रॉपर्टी का इतना सिग्निफिकेंट रिलेशन है लॉक के लिए कि लॉक गोज ऑन टू एंड लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का एंड लाइफ का इतना सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि वंस क्रिएटेड, अनलाइक हॉब्स, द सोवरेन इज नॉट सुप्रीम हियर. ही टॉक्स अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट. व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डू यू नीड? टू फीचर्स. A government which can ensure life, liberty and property, and a government which is highly limited in its role. Limited in its role, right? Except protecting life, liberty and property. इसके अलावा और कोई काम नहीं, और वो भी लीस्ट इंटरफेरेंस के साथ, वो भी लीस्ट लॉक कहता है स्टेट इज नथिंग बट अ नाइट वॉचमैन. जो बाद में आके हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं चौकीदार हूं. ये चौकीदार होने का मतलब क्या है?
नाइट वॉचमैन का काम करना एक प्रधानमंत्री क्यों बोलता है? मोदी जी क्यों बोलते हैं कि मैं भी चौकीदार हूं? लीस्ट इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट. Because prior to, let's say, 1990, Indian state was a thickest state. Thickest state. A maximalist interventionist state. Also known as My Baap state. In India, we call state as My Baap. Because the state used to intervene in economy. Everything in economy was controlled by a state. You had all PSUs, Navratna, Panchratna, ye and wo, control railway, airport, hotels, everything was being owned by a state. Right? Before 1990. All the social benefit welfare schemes were being sponsored by the state. All educational thing, you think everywhere in the state is there. But after 1990, India underwent liberalization, right? And the whole idea of the liberalization was to restrict the state in its interference in the domain of economy. So we started to privatize. Now we have come to a place where Hobbes' night watchman is being realized in India by Pradhan Mantri Narendra Modi. ये नरेंद्र मोदी जी साहब प्राइवेटाइज कर देगा, आलू प्याज तक प्राइवेटाइज कर दिया. He has done everything privatized, completely privatized everything. Airport privatized, railways will be privatized. You think of anything. Universities privatized, फंडिंग्स कट कर दिए हैं सारे यूनिवर्सिटीज के, आप जाइए प्राइवेट कंपनी से लेकर आइए फंडिंग. So everything is hospitals, you see maximum privatization. Everything will eventually be privatized. नहीं प्राइवेटाइज नहीं हुई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए. So what I am suggesting you, I am not saying that is bad or good. I am saying Locke is dancing on India, over India, right? समझ में आ रहा है बात ना? Because the minimalistic state. Now what is the logic behind it? You leave, and there where Adam Smith comes, right? You leave all those spheres of activities in the hand of market and do not intervene and control everything. The invisible hand of the market will decide everything. So you leave it to them. अब से पहले नौकरी कौन देता था? देना किसका काम था? गवर्नमेंट का. अभी पूरा स्टार्टअप 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 स्टार्टअप, एवरीवेयर स्टार्टअप. पकौड़ा तलना भी रोजगार है, पकौड़ा तलिए. Government cannot give everyone employment. All of a sudden you see people are saying that सरकार सबको नौकरी थोड़ी दे सकती. I mean, even in rhetoric this was absent. Nowadays it is coming too open, and people are also accepting it. That's another thing. But what I am trying to suggest, so you search your own job. You cannot go for only government jobs. You do your private job. Private jobs have no social security. They are very lean and thin hiring and firing process. You know, layoffs are going on. Thousands and thousands of employees are going up. सबके पास क्रेडिट ले लिया है, बाप बाप कर रहा है, कहाँ से चुकाएंगे? EMI दे नहीं पा रहा है. Now who will take the responsibility of the state? Will say मैं नहीं जानता, मैं तो खेल से ही बाहर हूँ भाई. पहले क्या होता था? स्ट्राइक पे लोग बैठ जाते थे, हमारा ये बढ़ाओ, हमारा पीएफ बढ़ाओ, हमारा ये बढ़ाओ. स्टेट वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. नाउ स्टेट इज सेइंग मेरा तो एडीआई ही नहीं है भाई. पेट्रोल निकालना है अडानी को दे दो, कोयला निकालना है अंबानी को दे दो, विंड एनर्जी बनाना है अडानी को दे दो, डिफेंस में अडानी को दे दो. अब सरकार नहीं बनाएगी डिफेंस. So you see, everything is being given to, I am not saying Adani is good or bad. What I am saying is everything is being given to the private companies. So there is no state intervention, because the moment the state intervene, you claim lot of rights, social security का measures, gratuity क्या बोलते हैं, gratuity. उसके बाद बोलते हैं छुट्टियां मिलेंगी आपको, है ना, घूमने के लिए मिलेगा आपको. ये सब स्टेट बेनिफिट में आता है. मैटरनिटी लीव मिलेगा आपको.
अभी आप प्राइवेट कंपनी में जाओ ये सब मांगने के लिए, आपके बच्चा पढ़ेगा उसका पैसा मिलेगा आपको, बच्चे के लिए सरकार स्कूल खोलवा देगा, केंद्रीय विद्यालय। कितना प्रेशर आ गया स्टेट के ऊपर में, एक एम्प्लॉय को इतना सारा बेनिफिट देना पड़ता है। अब ये प्राइवेट कंपनी में ये एम्प्लॉय जाएगा, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा और सीधा निकल जाना नहीं मिलेगा तो, और कभी भी तुमको हायर कर सकता हूं और कभी भी तुमको फायर कर सकता हूं। यहां पे एक बार हायर हो गए तो बस 65 साल तक कोई नहीं फायर कर सकता, उससे पहले मर गए तो आपका बेटा को नौकरी मिल जाएगी इफ इज ग्रेजुएट इनफ, नॉट एट द सेम पोस्ट बट वट एवर पोस्ट इज अवेलेबल विद इन दैट थिंग। समझ में आ रहा है बात? So, but this kind of activity is called thick state. Here you see state is acting as a parent. I will insure you. Now what we have is a night watchman state, where state is minimal. And this makes Locke, extremely liberal, father of liberalism. Right? You see Locke becoming father of liberalism from here. Night watchman state has different implication in terms of when it comes to liberty and when it comes to property and when it comes to life as well, of course, it's entangled with it. So, one cannot discount that. Liberty may state will not intervene in anything. You do whatever you think is right and wrong. Right? If you want to smoke cigarette, okay, fine, you smoke cigarette. I will write smoking cigarette is injurious to health. उसके बाद if you want to make choice, you make your own choice. You see, I have given a big, symbol of that cancer and so on and so forth on the packet. But even after that, if you want to smoke, you smoke. That's your choice. So you see here, a state is restricting itself. है ना? Unlike in some parts of India where alcohol is banned. Let's say Bihar, in Gujarat. Non-veg is also banned in Gujarat. There you will see a thick state curtailing your liberty. What if someone wants to have non-veg? Let's say, what if someone wants to have alcohol? पता नहीं, अगर नहीं है तो let's say alcohol तो ban है. Alcohol is banned in Bihar. What if someone wants to have alcohol? Black में नहीं पी सकते, that's illegal. पीने को आप पी सकते हैं. Thousands of people are dying because of that, bottling and all, है ना? So you see, their liberty is being curtailed. You have the maximalist state. So it has different implication in terms of liberty when it comes to. That's the point which I am trying to say. कि when it comes to liberty, वहाँ पर अलग तरीके से operate होता है night watchman state. When it comes to economy, it means what? By market, I will be the just protector and enforcer of the contract, nothing else. If you contracted with her saying that I will give you 500 rupees on 10th day, you means you have to give her 500 rupees on 10th day. Otherwise, you will be liable to punishment and you will have to follow that. You see that absence is being now implemented. समझ में आ रहा है बात? ठीक है? So limited government doesn't allow any kind of encroachment, by any government or by the private, individual over the property of others. That's one thing, right? And you see, to ensure maximum liberty to individual so that they can have a wide range of choices. Like in Bihar, if you go, you cannot drink, let's say, whiskey, or you cannot consume alcohol. Your choices are being restricted over there, right? So limited government serves that purpose, ensuring maximum choices to you, and as well as let you live the life that you want to live, ensuring your physical safety. So police should be there, but the police should not, tell you what you should wear or what you should not wear, whom you can hang out with and whom you cannot hang out with, right? What you should eat and what you should not eat. Let's say Ramdev is saying chowmin khane se ye ho jata hai. Someone comes out and gives a kind of, argument like that. So police should not start defending their argument and, implementing it.
है ना. Should just be there to ensure your physical security and safety. So life, liberty and property, LLP जो है, this is public good and the task of the government is to protect it at any cost. ठीक है ना, at any cost the task of the government is to protect it. There should not be any taxation without the consent of the people, right? This is again a major argument by Locke. No taxation without consent. ठीक है ना. So if people, you know, government would requires money to run. No, LLP, life, liberty and property is a public good, right? So public good, you know, should be protected by the government. किसी भी तरीके से सरकार को इन पब्लिक गुड को बचा के रखना है, तभी जाकर जनता सरकार को पैसे देगी, वरना पैसे एक भी रुपए नहीं देगी. और अगर पैसे नहीं देगी तो सरकार कहीं की भी नहीं चलेगी, कोई भी सरकार हो. मोनार्की में भी आप देखते हैं जनता से कर लिया जाता है. टैक्सेशन इज द बेसिस ऑफ एनी गवर्नमेंट टू रन, राइट. अदरवाइज इतना खर्चा करता है राजा लोग, खुद से काम करेगा जीवन में नहीं कभी कमा पाएगा इतना पैसा, है ना. तो कहां से आ रहा है पैसा? टैक्स से ही आ रहा है ना. सो अगर ये पब्लिक गुड को इंश्योर नहीं किया गया, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं किया गया, तो लोगों को मोदी जी को टैक्स देना बंद कर देना चाहिए. सो नो टैक्सेशन विदाउट द consent of the people, right? And consent only comes when you ensure the public good, right? So no government, no legislative, no executive can go against this three proposition of life, liberty and property. Now government, as far as government is concerned, Locke talks about legislative, executive, ठीक है ना. सो लेजिस्लेटिव का पावर कुछ भी हो, सुप्रीम बॉडी भी होगा वो लेजिस्लेटिव, लेकिन उसका भी काम वही है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को इंश्योर करना, ठीक है ना. और सब एवरीथिंग इज बीइंग रेस्ट्रिक्टेड. इट्स नॉट लाइक दैट कि देयर आर नॉट नो लिमिट्स टू, यू नो, लेजिस्लेटिव, एंड देयर आर सर्टेन लिमिट्स दैट लॉक, यू नो, प्रेस्क्राइब्स टू लेजिस्लेटिव. कुछ लिमिट है जो लॉक जो लेजिस्लेटिव को प्रेस्क्राइब करता है. लिमिट्स टू लेजिस्लेटिव लिख लीजिए आप लोग. पहला नंबर में, सो लेजिस्लेटिव विल बी गवर्न्ड बाय लॉज. नंबर 1, लेजिस्लेटिव भी जो होगा वो कानून से रूल होगा. ये नहीं कि जो मन में आया बोल दिया उसके बाद कोई भी चीज आप कानून बना दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. यस, दे विल बी गवर्न्ड बाय लॉज, एस्टैब्लिश्ड लॉ which is one and equal for all, सबके लिए समान और बराबर हो, ठीक है. दूसरा है, लॉ जो बनेंगे वो जनता के हित के लिए बनेंगे. लॉ मस्ट बी मेड फॉर द गुड ऑफ द पीपल. नो टैक्सेशन विदाउट पीपल कंसेंट. फिर लॉ के रूप में लिख लो, मतलब दीज आर द लिमिट्स, राइट इट डाउन. एंड फोर्थ इज लेजिस्लेटिव कैन नॉट ट्रांसफर द पावर ऑफ लॉ मेकिंग टू एनीबडी एल्स. जो लेजिस्लेटिव है वो कानून बनाने का पावर किसी दूसरे को नहीं दे सकती है, उसी को बनाना होगा. Similarly, I mean, the executive will have some prerogative powers, which is right. Executive के पास जो है कुछ अलग विशेष पावर होंगे, लेकिन वह भी जो होगा वो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है. सो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो होगा वो सुप्रीम होगा इस केस में भी, लॉक के लिए, ठीक है. आई बात समझ में है. कुछ अलग पावर होते हैं एग्जीक्यूटिव का, है ना. प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट के पास में अलग पावर होता है कि नहीं, इसी को ना एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. इट इज मोर देन अ पावर दैट एमपी हैज, इजंट इट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज, है ना. दो ओरिजिनली यू सी प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो एन एमपी, or MP, sorry, not an MP, or MP,
he is MP from Banaras, but unlike other he has got some special powers na, prerogatives, right? So but that doesn't mean कि वो जाकर कहेंगे कि इसको मार डालो, है ना, इन सबको मार डालना चाहिए, राइट? लोग कपड़ों से पहचाने जाएंगे मार दो, ऐसा नहीं बोल सकते है ना? So because he is a prime minister who is there interested with this idea to ensure life, liberty and property. ठीक है? So that is the central theme, and that is why you need to create government, and if this gets challenged, any one of it gets challenged, remove it. ठीक है? That is the whole and soul rough and tough idea of Locke. ठीक है? चलिए, लगभग most of the thing, every important thing has been taught.